Good morning, team. LIC is considering depository. So this is a bit negative for CDSL. Why it is negative for CDSL? CDSL has 7.16 crores of demat account, whereas NSDL is having only 2.89 crore of demat account. But when you see the accounts, the total asset under custody, now NSDL has 10 times more than what CDSL has. So it is about 320 lakh crore, whereas for CDSL it is only 38 lakh crore. That is the difference. So in spite of being 1/3 of what CDSL, and if LIC also comes and competes, CDSL growth is only in accounts where people are traders who don't have any holding, so it doesn't really benefit CDSL. That is why we have been slightly negative on CDSL at current levels. Yesterday, data from Tara has come. So Jio has added about 29 lakh subscribers. So they have a total of 41.59 crore subscribers. Airtel has added 5.1 lakh subscribers. It has 36 crore subscribers. Idea has lost again. So Idea is losing subscriber consistently. So they have lost about 15 lakh. So their base is slowly lowering. It is now 25.5 crore. Tele density is at 83%. But when it comes to active on the network, Airtel does better. It is almost 78% of people who are with Airtel are very active, whereas in Jio it is 91.88 and Vodafone Idea it is 85%. So market share, when you take market share, 36% is Jio, 31% is Airtel, and Vodafone Idea has 22%. This is one reason that we don't like Vodafone Idea. We feel turnaround is a very difficult, but whereas we like Airtel because the number of active subscriber is almost at the highest level. There is one IPO which is going on, Harsha Engineers. It has subscribed more than 10%. Now, I think whatever I can understand a little bit, the issue is very good. But I'm not a fan of IPOs. Even Tamil Nadu Mercantile Bank listed, it has some legal cases, so we are not very gung-ho about it. So whenever it comes to IPOs, I better stay away because there are a lot of opportunities in the market. Government will announce logistic scheme. We need to understand, there was Gadi Shakti scheme where government has identified critical gap in 196 projects which are very important for execution speed. Why this logistic thing is important is logistic cost to our GDP is 14%, whereas global average is only 8%. You take any country, they have a very efficient loading unloading system from the time of manufacturing. Once it leaves the gate till it leaves our port, India takes so much of time, and there are a lot of cost constraints here. But you take China, US and all, it is the fastest. So we need to reduce that so that we become competitive. So this logistic policy will be announced on Saturday. So I think Blue Dart, Mahindra Logistic, VRL Logistic are few stocks to watch out for. Gujarat Gas, IGL, MGL, these stocks are for long-term people. There are few things which are happening. I think Gujarat Gas will start to benefit. Singapore GRM has come to negative. After a very long time, again it has come to negative. Why it has come to negative? Because China has opened its economy. Otherwise, many regions in China was under lockdown. Now they have come, so they are dumping in the international market. So this will have impact on Reliance, Chennai Petro, MRPL, mostly export oriented or standalone refiners more than IOC, HPCL and BPCL. But China opening up is negative for steel sector also. So they also will come and dump
steel commodities, so which will have some negative impact. So we are not too positive on steel at this level. REC board approves lending to logistic and infra sectors also, and to extend permitted by the government. So this is positive for REC. I think REC, PFC are two high dividend yielding stock. So somebody who wants to play dividend yield and 10% return in next 1 year, you can look at it. No? And whenever NBFC and banking are rallying, I think this stock also will rally. Tata Metallic has inaugurated phase 1 of expansion project of ductile iron pipe. The expansion amount is 600 crores, and the capacity will become 4 lakh tons. And the new project which is inaugurated, it is most advanced ductile plant with high level of automation and robotics, and make the operation very efficient. So now this is something positive. Now I was looking at stock which can do very good. Tire stock was doing good. Even Hitendra was talking about tire stock. I think Philip Carbon is one company which supplies raw material to tire companies. This is one stock. Valuation is still attractive. We still like Apollo tires, Seat, JK Tire. Any dip would be an opportunity to buy in that space. Bharti Airtel is again all-time high stock. We like that. Kalyan Jewelers, any dip is a buy. Mahindra CIE has started to perform. We like the stock. Mahindra CIE is a CIE, a German company. I think because of shutdown in Europe, they might try and increase their output in India, is my understanding. Karur Vysya Bank, City Union Bank, Federal Bank, IDSC First Bank still looks very good, and Indian Bank also. With that, over to you, Brijesh. Good morning, everyone. So अभी हम ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. So पहला अपडेट है माइंट्री के ऊपर. माइंट्री ने अनाउंस किया कि वो डिजिटल सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करेंगे L&T ग्रीन हाइड्रो प्रोजेक्ट गुजरात में. इससे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये करेंगे. माइंट्री पे हमारा पॉजिटिव व्यू है. हमारा टारगेट प्राइस 3,350 का माइंट्री पे हम मेंटेन कर रहे हैं. दूसरा अपडेट है हमारा बजर पेंट्स के ऊपर. बजर पेंट्स में क्रूड में जो गिरावट देखने को मिली, इससे उनके मार्जिन इंप्रूव होने के चांसेस है. सो लास्ट ईयर उनके 38% का ग्रोथ था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये साल उनका एक 40% का ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 23 में देखने को मिल सकता है. हालांकि बजर पेंट के कंपटीशन में एशियन पेंट्स है जो मार्केट लीडर है, बट बजर पेंट में हमने ये देखा है कि उन्होंने 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किया वाटर प्रूफिंग को रिलेटेड. सो उनके और उन्होंने मैनेजमेंट का ये कहना है कि वो कॉन्फिडेंट है कि 100 बिलियन रुपीस के जो उनके रेवेन्यू है वो अचीव कर सकते हैं. और ओवरऑल हमारा बाय रेटिंग है बजर पेंट्स के ऊपर 812 का टारगेट रहेगा. और एक मेजर अपडेट है एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर. एफएमसीजी सेक्टर में अभी हालांकि कुछ दिनों में ये देखा गया है कि उन्होंने काफी सारे कंपनी ने उसके जो बेनिफिट्स है, रॉ मटेरियल को रिलेटेड जो रिडक्शन प्राइस हुआ था उसमें जो बेनिफिट्स जो है उन्होंने कस्टमर्स को पास ऑन किए. बेसिकली अगर आप देखोगे तो गोदरेज नंबर 1 जो सोप कंपनी जिसका 20% का जो सेल है, उनका जो 5 पैक्स ऑफ बंडल्स जो आता है उसमें उन्होंने जो कॉस्ट 15% से कम किया है. पार्ले जी है जो उनके बिस्किट्स के जो पैकेट्स है उनके वो प्राइस नहीं घटा सकते, तो उन्होंने बिस्किट्स के जो साइज वगैरह सब बड़े थोड़े से बड़े करके उन्होंने 10 to 15% के जो डिस्काउंट्स वाले स्ट्रक्चर्स में दे रहे. एडिबल ऑयल के जो कंपनी है उन्होंने भी पाम ऑयल्स के जो प्राइसेस है उसको 30 to 40% से कम किया हुआ है. सो हमारा ये सेक्टर में बेसिकली जीसीपीएल पे हमारा बाय रेटिंग है जो हम मेंटेन करें कि 1000 का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है. अगला एक अपडेट है इंडसइंड बैंक के ऊपर. इंडसइंड बैंक ने बताया कि उनके बोर्ड मीटिंग में उन्होंने अप्रूवल दिया है रीअपॉइंटमेंट ऑफ सुमनाथन कट्टापाल्या जो एमडी और सीईओ ऑफ द बैंक है. ये उनका टेन्योर रहेगा 3 साल के लिए फ्रॉम मार्च 24 मार्च 24 2023 से लेके मार्च
2026 तक। ये आरबीआई का अप्रूवल इसमें बाकी है, बट हमें लगता है कि ये एक पॉजिटिव न्यूज़ रहेगा आईडीबीआई इंडसइंड बैंक के लिए। इंडसइंड बैंक में हमारा होल्ड रेटिंग है और बाय रेटिंग है, और उसका टारगेट 1260 है। अगला एक अपडेट है टाटा पावर के ऊपर। टाटा पावर ने जो उसका वो सब्सिडी रिन्यूएबल एनर्जी के जो खुद की जो सब्सिडरी है, उनको एक ऑर्डर बुक दिया है 600 करोड़ का, जो सेटअप करेगी 1000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट फॉर SGVN। ये जो उनका इंटरनल जो है उनके लिए। तो हमें लगता है कि टाटा पावर के लिए भी ये काफी अच्छा पॉजिटिव न्यूज रहेगा। इसके आगे एक बीपीसीएल के ऊपर न्यूज है। डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी, बट जो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है हरदीप पुरी, उन्होंने बताया कि लेटेस्ट अभी वैसे कोई अपडेट्स वो नहीं सोच रहे, बट मे बी इन फ्यूचर वो शायद ये रूल आउट नहीं करेंगे, बट लेटली वो डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं सोच रहे। उसके बाद एसबीआई कार्ड्स के ऊपर अपडेट है। उन्होंने 500 करोड़ इशू रेज किया है बॉन्ड्स के थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट में। तो बेसिकली ये बॉन्ड रेट रहेगा इसका 7.39%, और ये मैच्योर होगा 15 सितंबर 2025 में। अगला एक अपडेट है इंडियन होटल्स के ऊपर। इंडियन होटल्स ने हरिद्वार में 129 रूम्स फ्रेश उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जो ये ग्रुप है जिनका नाम है मार्वेलस इंफ्रास्टेट। सो ये जो एग्जिस्टिंग होटल है उसको वो रीब्रांड कर देंगे विवियंता पोस्ट के अंडर। सो ये पॉजिटिव न्यूज रहेगा टाटा इंडियन होटल्स के लिए। अगला एक अपडेट है टाटा मोटर्स के ऊपर। टाटा मोटर्स ने बताया कि उनका जो सेल्स है, जो 20% ऑफ सेल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट से आएंगे, और वो होगा पैसेंजर व्हीकल, और बेसिकली ईवी सेगमेंट में होगा। तो वो बता रहे हैं कि उनका जो ईवी में जो प्रोडक्ट्स है नेक्सॉन ईवी और टिगोर ईवी, ये इसकी सेल्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50,000 यूनिट से ज्यादा, और वो शायद देख सकते हैं ये साल में। तो ये ओवरऑल कंपनी के ग्रोथ में ऐड करेगा। तो बेसिकली ये स्टॉक के लिए ये अच्छा न्यूज़ है। अगला एक अपडेट है हमारा जहाँ बैटरीज के ऊपर। तो इसमें उनको सस्पेंशन, ये आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक सस्पेंशन ऑर्डर दिया था। तो वे हाई कोर्ट ने बताया कि ये अभी फिलहाल तो वो इस पे एक्सटेंड ही कर रहे। तो इस पे अभी तक कुछ आगे का कुछ अपडेट्स नहीं है, तो थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है हमारा जहाँ बैटरीज के ऊपर। अगला अपडेट है गोदरेज प्रॉपर्टीज के ऊपर। गोदरेज प्रॉपर्टी को 1200 करोड़ के दो प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं मुंबई में। बेसिकली थाना है और एक दादर वडाला में, जिसमें वो 700 घर वगैरह डेवलप करेंगे। और इस ओवरऑल एरिया है इसका 8 लाख स्क्वायर फीट। तो ये गोदरेज प्रॉपर्टी इसके लिए भी एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज रहेगा। और एक अपडेट एक LIC के ऊपर है। LIC कंसिडर करेंगे वो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट डिपॉजिटरी में आए। तो बेसिकली अभी एग्जिस्टिंग CDS और NSDL है। अगर LIC भी आता है डिपॉजिटरी सर्विस में, तो बेसिकली CDSL जिसका 38 लाख का क्लोज का अकाउंट है, तो हो सकता है कि ये CDSL के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। तो NSDL का जो है वो 10% से ज्यादा है CDSL से। लेकिन LIC भी अगर एंटर करता है इस सेगमेंट में, तो CDSL के लिए थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज हो सकता है। और ओवरऑल हम थोड़ा सा कॉशियस व्यू मेंटेन कर रहे हैं CDSL के ऊपर। कल हमने देखा कि इसके टेलीकॉम के डेटा आए थे, जो सब्सक्रिप्शन जो डेटा है, जिसमें ये पता चला कि जियो ने 36% ऐड किया है, एयरटेल ने 31% ऐड किया है, वोडाफोन ने 22% ऐड किया है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जिस हिसाब से काफी सारे जो कस्टमर जो है वो हमारा ये मानना है कि शायद वो एयरटेल के साथ ज्यादा जुड़ते हैं। ओवरऑल एयरटेल भी हाई की तरफ ट्रेड करे, तो हमें लगता है कि एयरटेल एक आउट परफॉर्मर रहेगा इस सेगमेंट में। हम पॉजिटिव व्यू मान के चलते हैं। लॉजिस्टिक्स के ऊपर भी एक
पॉलिसी अपडेट आना है तो बाय सैटरडे, तो ये अगर ये आता है तो फिर लॉजिस्टिक सेक्टर्स में काफी कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। इन अभी एट करेंट सिनेरियो में हम काफी पीछे हैं। अगर आप चाइना और यूएस को कंपेयर करोगे तो वहाँ पे काफी प्रोसेस काफी फास्ट होता है, जबकि अपने इंडिया में काफी स्लो है, जिस वजह से बहुत सारे डिलेस और टाइम कंज्यूमिंग लगता है। अगर ये पॉलिसी आती है सैटरडे जो पॉजिटिव रहेगी, तो हम महिंद्रा लॉजिस्टिक, ब्लू डार्ट, ये कंपनीज को हम दे सकते हैं। तो ये आने वाले दिनों में मुझे हमें लगता है कि ये पॉजिटिव रहेगा। और एक अपडेट है गुजरात गैस के ऊपर। ये जो आईजीएल और एमजीएल जैसे स्टॉक्स है उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छे स्टॉक्स हो सकते हैं, इसमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा पॉजिटिव व्यू है आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस के ऊपर। और एक अपडेट है सिंगापुर जीएमआर के ऊपर। वो हम सिंगापुर जीएमआर नेगेटिव में दिख रहा है। बेसिकली ये चाइना की वजह से, चाइना में जो फिलहाल लॉकडाउन चला था उसने अपने इकोनॉमी ओपन किया है। तो ये तो इस वजह से तो क्या होगा कि काफी सारे डंपिंग करना चालू कर देंगे। तो ये जो रिलायंस, चेन्नई पेट्रो, एमआरपी, ये ऐसे जो स्टॉक है इसको थोड़ा सा अफेक्ट कर सकता है। तो हमें थोड़ा कॉशियस व्यू लेके चलना चाहिए। चाइना के ओपनिंग की वजह से हो सकता है वो स्टील सेक्टर में भी थोड़ा डंपिंग कर सकते हैं, तो हमें स्टील सेक्टर में भी थोड़ा कॉशियस व्यू मेंटेन करना चाहिए। तो टाइमिंग के लिए उसमें आपको थोड़ा सा साइडवेज या फिर थोड़ा मंदी देखने को मिल सकता है। और एक अपडेट है टायर स्टॉक्स के ऊपर। तो क्रूड के प्राइसेस वगैरह गिरने के साथ टायर स्टॉक्स में काफी अच्छा हमने कल तेजी देखने को मिला। तो हम मेंटेन कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी टायर स्टॉक्स में आपको पॉजिटिव व्यू देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो आप टायर स्टॉक पे पोजीशन होल्ड कर सकते हो। बैंकिंग में हम पॉजिटिव मेंटेन कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल में पॉजिटिव व्यू मेंटेन कर रहे हैं। कल्याणी ज्वेलरी जो है उनमें हम पॉजिटिव व्यू मेंटेन कर रहे हैं। तो ओवरऑल बायस पॉजिटिव है। थोड़ा सा मार्केट में आपको डिक्लाइन देखने को मिल सकता है प्रॉफिट बुकिंग के चलते। लोअर लेवल पे हम लोग वापस बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म व्यू हम बुलिश मेंटेन करके चल, तो डिप्स में आप बाय करिए। Yesterday, if we see Nifty opened on a flat note, it made a high near about 18,100 levels. But from those levels, we witnessed a sharp profit booking in the index, and in the first only we breached the 18,000 level. Then during the day, we consolidated in a narrow range, but in the last hour again we broke the 17,900 level and closed the post below it. So on the charts, if we see, then support again stands at a 17,800 level, and we can find resistance near 18,100 level for the Nifty. Vis-a-vis Bank Nifty in the opening made a fresh high of 41,840 lifetime high, and then again it also for witnessed some profit booking from the higher levels, and it closed above 41,200. And again for the Bank Nifty, if we see the support stands at 40,000 levels, and the resistance is again the life high or the 42,000 level can be that. If we take out it decisively, then we can move higher than that. On a sectoral front, if we see, then yesterday auto space tire sectors were very active. Why? Because the report of that margins are going to improve, and efficiency and crude oil also coming down. The tire stocks were very active: C8, MRF, Apollo Tire. And in the power space, Power Grid and Tata Power were also very looking good and strong over there. Hotel stocks were also recovering and making new highs like Indian hotels. And on the losing side, if you see, the media sector was weak due to PVR block deal in that. And on the overall on the sectoral front, then healthcare, pharma, IT are still on the downside. Any bounce in that should be used for an opportunity to exit. Then if we see on the Bank Nifty derivatives front, then Bank Nifty put trading was seen at 41,000 strike, and call trading was seen at 41,500 strikes. And on the Nifty, if we see, then put trading was seen at 17,900 levels, but that would be taken out today. And the call trading is seen at 18,100 and 18,000 levels respectively. And on the futures front, if you see, then we had seen a short built up, that is mere shorts were there of 0.2 million shares. And on the advanced decline ratio, if we see, then there was it was negative with 71 stocks on the gaining side and 127 on the losing side. PCR also saw a downtick from 1.39 to 1.2, and from 1.2. And the top longs were built in Apollo Tire, MGL, and Ambuja Cement, while shorts were built up in PVR, Infosys, and Bajaj Spencer. On the FI side, if you see, then FI also added again short to the 10,000 contracts with 67,000 contracts open, and the long short ratio again stands at 24%.
In the cash also, they again sold to the tune of 1270 crores, and DI also sold to the tune of 928 crores. And if you see in the global and overnight, then we are seeing a today down by 70, 80 odd points. If we see a 17,800, we can see as a support from those level. If we revert, then it would be better for the index. So that's it from mine. I'll hand over to Banti sir for more research updates. Thank you. Thank you, Hitendra. Good morning, sir. Good morning, team. Few updates from my side. Starting firstly on the Mindtree. Mindtree has announced that it will be implementing a digital solution for L&T's green hydrogen plant in Gujarat. With the help of artificial intelligence, this solution will enable remote monitoring and control of all the services at the plant to help optimize operational and energy cost and drive effective utilization of sources. Positive development. This is very much a positive development for Mindtree with respect to its future earnings. Currently, we have a hold rating of the Mindtree with a target price of 3350. Secondly, on the Berger Paints has said that the company expects margins to improve in second quarter because of the fall in the crude prices, and they expect gross margins likely to grow by 200 to 250 bips on a YOY basis. So if we see last year same quarter or 2Q FY22, gross margin was approximately 38%. So this quarter Q2 FY23, the expectation is around 40% in terms of gross margin. Also, company says they are targeting to maintain double-digit volume growth during this quarter due to healthy demand continues. Also, company aims to improve positioning in luxury paints business, where currently Asian Paints is the market leader. Berger Paints has introduced two new products in waterproofing category during Q2 FY23. Also, in FY23, management is quite confident to cross 100 billion in terms of revenue. So we are very much positive on the Berger Paints, and we expect we have a buy rating with a target price of 812. Next is on the FMCG sector. FMCG companies are passing on benefits of reduction in raw material prices to consumer. As we see, Godrej consumer has increased grammage of rupees 10 Godrej number one soap by 20% and reduced the price of 5 soaps bundle pack of Godrej number one by 15%. Parle is also offering 10 to 15% discounts on its large pack of biscuits. Edible oil companies have passed on the benefit of lower palm oil prices to consumers by cutting prices in the range of 30 to 40%. Recent decline in RM prices or raw material prices is an opportunity for FMCG companies to carry out price cuts and derive the volume growth. So it seems to be positive for the FMCG sector, and under FMCG sector, we are positive on the Godrej consumer with a target price of 1000 rupees. Next update is on the IndusInd Bank. Board of Directors of IndusInd Bank at its meeting which was held yesterday has considered and approved the reappointment of Mr. Suman Katapalia as the MD and C of the bank for the period of 3 years, which is effective from March 24, 2023 up to March 23, 2026, though it is subject to the approval of the RBI and the shareholders of the bank. However, we believe RBI should give the approval in which should be considered as the positive with respect to IndusInd Bank, and we are positive on this bank, and we have a buy rating with a target price of 1260 rupees. Next is on the UPL. The company has said that they have acquired 26% stake in Clean Max Kratos Private Limited. What they will do, this company will develop and maintain a hybrid of 20.05 megawatt of solar and 33 megawatt of wind power project. And company has said they will further invest 40 crores in this company, Clean Max Kratos. So this seems to be very much positive with respect to UPL. Last is on the Tata Power. Tata Power Solar Systems, which is the wholly owned subsidiary of Tata Power Renewable Energy Limited, have received the letter of award of rupees 612 crores for setting up of 100 megawatt ground mounted solar project for SGVN. So that seems to be the good amount of order book positive for the Tata Power solar system, which is a subsidiary of Tata Power.
So that's it from my side. Over to you, Kshitija. Thank you, sir. Good morning, everyone. Few updates from my side. BPCL first update. Union Ministry of Petroleum and Natural Gas, Hardeep Puri had said that the disinvestment plans for a BPCL refining fuel and retaining firm are not on the table as of now. So last month, the government said that it will be decided on reinitiating the process of BPCL strategic sale based on a review of the situation in due course. So next update on SBI card. So SBI card and payment service has raised rupees 500 crore by issuing bonds on a private placement basis. The purely play credit card issuer said it allowed 5,000 fixed rate, unsecured, taxable and redeemable bonds yesterday. So in the nature of non-convertible debentures of 10 lakh, each aggregating rupees 500 crore. So the tenure of the bond is 3 years and set to mature on September 15, 2025. And the bond bear a coupon rate is 7.39% per annum. Next update on Indian Hotel. The Tata Group's hotel operator signed a 129 room Vivanta Hotel in Haridwar, Uttarakhand in management contract with Marvelous Infra Estate located in State Industrial Development Corporation of Uttarakhand Limited, Haridwar. So this existing hotel will be rebranded to Vivanta post upgradation. Next update on Tata Metally. The metal player began expansion work of ductile iron pipe inaugurated worth 600 crore expansion project of Tata Metallics ductile iron pipe plant in Kharagpur. So this new plant will help expand its product range and enhance its presence in the fast growing water infrastructure space. So this is an update from Tata Metally. So next update on Tata Motors. The company expects 20% of its total passenger vehicle sales in the domestic market to come from electric vehicle in the next 3 years. So this update of from the company senior official said yesterday. So the company which has electrical models such as a Nexon EV, Tigor EV, expect to touch 50,000 units mark in the total EV sales this year. So this is one update on electrical vehicle on Tata Motors. So next update on Amaraja battery. So High Court of Andhra Pradesh has extended the interim suspension order of closure orders by the Andhra Pradesh Pollution Control Board for the company's plants, which situated at Karakkambadi, Tirupati and Nune Gundala in Andhra Pradesh and Kshitija, we cannot hear you. You have muted yourself. You are talking about Amar Raja battery. किसी ने साइन कर लिया शिव सर ही यार. Am I audible, sir? Yeah, you are audible. Amaraja battery, the High Court of Andhra Pradesh has extended the interim suspension order of closure ordered by the Andhra Pradesh Pollution Control Board for the company's plant situated at Karakkambadi, Tirupati and Nunegundla in Andhra Pradesh until further orders. So next update from Godrej Property. Godrej Property achieved sales of over 1,200 crore from 2 project launches in Mumbai. So Godrej Asken in Thane and Godrej Horizon in Dadar Vadala record the sales of over 700 homes with an area over 8 lakh square feet. So that's it from my end. Now I will hand over to Prabhakar sir for further research update. Thank you and over to you, sir.